Good morning, dear students. Welcome to Aryan Gurukul family. I am Chinmay Padhi, your biology mentor. Okay, students. So, students, last class में हम discuss करथिले about two kingdom system of classification. Again, I repeat. First, Aristotle. Aristotle's classification. Okay. Then two kingdom system of classification proposed by Linnaeus. System of classification. Then कौन डिस्कस करथिले थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Proposed by Ernst Haeckel. Clear? Then पहले आदि डिस्कस करिवा about the four kingdom system of classification. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सरीछि. तो तीनटा किंगडम में हम कौन डिस्कस करथिले प्लांटी, देन एनिमलिया, देन योर प्रोटिस्टा. ओके, एबे पिले हम डिस्कस करिवा फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सेत्रा गोटे नवा किंगडम ऐड हो. क्लियर? तो लेट अस डिस्कस क्लियरली फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. First of all, who proposed four kingdom system of classification? Key points: कोपलांड. साइंटिस्ट को नाम मिले कोपलांड. कोपलांड प्रपोज करथिले फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो चारिटा किंगडम कोन कोन ऑलरेडी तीनटा हमर अछि बिले. फोन नंबर एडा दैट इज प्लांटी अछि, एनिमलिया अछि, ओके, प्रोटिस्टा अछि. द फोर्थ वन इज मोनेरा. तो ए तीनटा विषय ऑलरेडी हम डिस्कशन कर दै छी. इट्स ऑल ओवर. क्लियर? एबे जो पिले मोनेरा अछि किंगडम गोटे मोनेरा एड एला फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रे. तो को ऑर्गेनिज्म गुडी को हम मोनेरा भीतर इंक्लूड करलो. कोपलांड इंक्लूडेड ऑल प्रोकैरियोट्स. inside kingdom monera. Clear? Best example, the known example of prokaryotic cell is your bacteria. Okay, there are some characteristic features of prokaryotic organisms. What are? First of all, pro means what? Primitive, as I already discussed. जो मानकर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नथिबो ताकू हमें कोन कहबे पिले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. आउ कोन कोन एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अछि एमानक पाखरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस
absent रहिबे membrane bound cell organelles means what ना जो cell organelles अछंती हमर लाइक गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तो एमानकर निजस्व गोटे ओन मेम्ब्रेन अछि तो जार निजर ओन मेम्ब्रेन अछि से सेल ऑर्गेनेल्स गुडी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से रहिबे नाही बुझा पड़ला तो कोपलान कोन करे पिले made a separate kingdom for the all prokaryotic plants clear so this is what about your four kingdom system of classification I just give a summary because these are not in your syllabus only two kingdom system of classification and five kingdom system of classification is there but how five kingdom system of classification was published that means directly 2 ru to 5 हे जाने ना 2 पर 3 3 पर 4 4 पर 5 हे that's why मु तुमको कहली what is the four kingdom system of classification clear next we will go to the five kingdom system of classification the five kingdom system of classification before going to the five kingdom system of classification five kingdom system of classification is the most accepted one this system of classification was proposed by Robert Whittaker in the year 1969 you have to remember the scientist name there is a question who proposed five kingdom system of classification that's why the name Robert Whittaker is highly essential the name Robert Whittaker and also the year clear then the key point is that what are the five kingdoms panchta kingdom kon bole as I already mentioned in the slide first one is Monera एटी तुम गोटे पॉइंट तुमको पे मन रखा पड़ो देख देयर इज ए सीक्वेंस इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बट इन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोटिस्टा बट हियर मोनेरा फर्स्ट कम मोनेरा देन प्रोटिस्टा देन फंगाई देन प्लांटी एंड देन एनिमलिया एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मोनेरा नंबर पहले को ऑर्गेनिज्म में आजीबो all prokaryotes clear similarly if तमरो प्रोटिस्टा रे कोन जीवो all unicellular eukaryotes similarly the new kingdom added that is your five kingdom classification कोन बोले fungi is the new kingdom जत तुम पिले मु ड्रॉबैक डिस्कशन करथिली टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रो प्रीवियस स्लाइड बुझो ड्रॉबैक डिस्कस करथिली टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रो हियर देखो पिले नंबर लिखा हिची कोन इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंगी it did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants. That means ये तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करथिले लिनायस से कोन करथिले हेटेरोट्रॉफिक फंगाई इज हेटेरोट्रॉफ एंड ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स समान को गोटा किंगडम में इंक्लूड करथिले बट इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन there is separate kingdom for fungi
there is separate kingdom for fungi. Clear? बुझा पड़ला? Separate kingdom for fungi. Clear? एबे देखो पिले ए जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तमरो रॉबर्ट व्हिटेकर प्रपोज करले, there is some criteria or there is some basis of 5 kingdom system of classification. What are they? First of all, cell structure. Every organism मानकर cell structure कोन, that may be prokaryotic or eukaryotic. मोड चार्ट भी तमरो बनै देछि, एबे तुम जस्ट बेसिस कहूची, देन नेक्स्ट स्लाइड दैट इज चार्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन केमी तमे मन रखियो. देन थालस ऑर्गेनाइजेशन. थालस माने कोन? थालस उठले तमरो कोन ना ए ग्रुप ऑफ सेल दैट डिड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ, तब हम कहूची थालस. तो थालस ऑर्गेनाइजेशन. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. देन रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो आपको बेस करके प्रपोज करथिले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की व्हिटेकर. क्लियर? ऑर्गेनिजम्स 5 किंगडम्स. किंगडम मोनेरा फर्स्ट वन, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. एबे पिले तमरो गोटे ही डाउट रहइबो कोन, मोनेरा रे तमरो रहि होला प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा रहिला तमरो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, large eukaryotes, plantae all green plants, animalia all animals. ओके, एबे तमरो पिले फंगाई रे कोन जाउची, ए गोटे जिंस रे तम डाउट रहइबो. That is all saprophytes. All saprophytes. एबे तुम पछालिबो सर saprophytes कोन ना? saprophyte होउची पिले तमरो गोटे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो माने कोन करचोंती डेड मैटर ऊपर निचो को डेड बा डेड ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करचोंती एज ए फूड. फॉर एग्जांपल गोटे एनिमल्स मरीगला, आफ्टर हिज डेथ से मानक भीतर कोन अछि ऑर्गेनिक मैटर अछि. तो ऑर्गेनिक मैटर जो तुम कोन हबो डिकम्पोज करिवे. तो ऑल saprophytes live on dead matter. Clear? That saprophytes were separated into a kingdom, that is your kingdom fungi. Clear? बुझा पड़ला ए पर्यंत? Shall I go forward? Okay. Next, 5 kingdom system of classification. पहले इस इंसर्ट को बहुत भल से you have to remember the chart. First of all, characters. Here is the characters. Here there are 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. These are the 5 points you have to remember. First one is your cell type. Monera रे तमरो सेल टाइप कोन पिले? As I already told you, all prokaryotic organisms were included in kingdom Monera. That's why here is the cell type is your prokaryotic. That means all monerans have prokaryotic cells. Clear? Next, Protista. Here what happened? We already discussed the cell type in prokaryotics. Cell type in Protista is your eukaryotes, but they are unicellular. एबे हम को एटा पछारिने unicellular की multicellular. We just want to know the cell type, that is your eukaryotic in Protista. दीटा सेल टाइप कुछ नंबर पिले कोन? गोटे प्रोकैरियोटिक, गोटे यूकैरियोटिक. तो मोनेरा को छाड़ देला सब जा तुम कोन हबे पिले? यूकैरियोटिक. That's why fungi is also eukaryotic, plantae is also eukaryotic, and animalia is also your eukaryotic. Clear? एबे जिबे पिला में cell wall. Next point, that is your cell wall. As we already discussed,
Apart from plant cell wall, what is cell wall? First, we will discuss what is your cell wall. Clear? Cell wall को तापर आमे जिबा तार composition. Outermost layer of a cell को हमें कौन से cell wall. Outermost layer of a cell. को हम कौन से कौन cell wall. So it is non-living and rigid. But there is a twist. What? The composition of cell wall vary from organism to organism. Let us take an example, that is your plant cell. Plant cell wall present. Here the composition is, that means cell wall is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. Cellulose, hemicellulose and pectin. Here what happened? The concentration of cellulose is more as comparison to hemicellulose and pectin. That's why we will call plant cell wall as cellulosic. Plant cell wall as cellulosic. Similarly, let us take an example of fungal cell wall. What? Question paper pele ethi asuchi. Fungal cell wall made up of chitin. That's why fungal cell wall is your chitinous. Here cellulose is absent. That's why this is your answer number कौन होगा? Chitin. Clear? एबे हमें पहले डिस्कस करिबा स्लाइड को जिबा. Here what happened? Cell wall. First of all, हमको डिस्कस करियर अछि cell wall कोटे कोटे प्रेजेंट अछि और जदि प्रेजेंट अछि को कंपोजिशन को नै किसी तैयारी अछि. तो फर्स्ट here what? Non cellular monera रे तो polysaccharide amino acid को नै तो तैयारी अछि cell wall. Here present in some, because all protista does not contain cell wall, present in some. Here what? Fungi is present but without cellulose. That means it is not chondrogy. Chitin. You have to remember the what chitin. Fungal cell wall is made up of chitin. Here plantae present but not chitinous. Here what? Cellulosic. Here what? Cellulosic. But in animalia there is no cell wall. That means cell wall is absent. Cell wall nahi आगा तो composition रे किछि discussion करिवार है नै. Clear? बुझिला second point. Next, nuclear membrane. Here तुमको गोटे पहले पॉइंट मन रखियो पड़िबो. Nuclear membrane is a characteristic features of eukaryotic cell only. तो पहले बे मोनेरा को छाड़ी देले और सब जगह तमरा eukaryotic. That means the very clear point is that in the monera nuclear membrane is absent, as I already written here. Whereas in all apart from monera, in protista nuclear membrane is present. In fungi, nuclear membrane is present. In plantae, nuclear membrane is present. In animalia also nuclear membrane is present. So there is no confusion in this point. Okay. Next, body organelles.
Body organization, that means what? That may be cellular or unicellular or multicellular. ये सब discussion करेगा एडे. देखो, मोनेरा तमरो कौन पिले? Cellular. Both unicellular and multicellular prokaryotes are present in Monera. Protista, that is what you? Cellular. But here what? Unicellular eukaryotic organisms is present. Unicellular. Eukaryotes. Clear? But in fungi what? That is your multicellular but loose tissues. Well differentiated tissue system is not there in fungi. Multicellular loose tissues. But in plantae, both tissue and organ. In animalia, tissue, organ and organ system is present. Let us discuss detail how the tissues and organs will form. Clear? First of all, cell, then group of cell, from group of cell, tissue is developed. Then from group of tissue system, tissue system तो हमारा बहुत जिम्मेदार होता है organ. Clear? Organ तो नहीं कि बहुत जिम्मेदार होता है पहले कौन? Organ system. Organ system तो हमारा बहुत जिम्मेदार कौन? Organism. Clear? You have to remember the sequence. First of all, cell, then tissue. Though the living system, it starts from cell. The living organism start from cell. That's why cell is known as the basic unit of life. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ cell को कौन बोलते हैं? Basic unit of life. Because starting point तमरो कोड पिले cell रो, then cell रो बनिला कौन? Tissue रो बनिला tissue system रो बनिला organ रो organ system, then तमरो organisms. बुझिला? Go to your slide. Here what happened? Body organization, plantae, tissue system अच्छी, organ अच्छी, जिम तमर leaf कौन? Plant root organ, fruit, flower. But in animalia what? Let us अगुरु में तमको अच्छी all human beings are animals. That means animals under हमें human beings को नहीं परिवार example हिसाब रे. But all animals are not human beings. तो हमें देखो पहले hand but organ, finger organ, ear organ, eye organ, तमर organ system अच्छी. That's why here I written tissue is there, organ is there, and organ system is there. Complete. Next, the last one, that is your mode of nutrition. एटा बहुत important बिले, बहुत concept पे तुमको बुझेवार अच्छे. तो मोनेरा रे तुमरो जो राउची बिले organisms that may be autotrophic भी हेई परिबे and heterotrophic भी हेई परिबे. Both autotrophic and heterotrophic. Autotrophic को माने जो autotrophic अच्छी that may be chemosynthetic and may be photosynthetic. Clear? So Monera mode of nutrition, autotrophic, that means they prepare their own food in the process of photosynthesis. Example is your blue green algae.
पे again data अच्छी that may be photosynthetic or chemosynthetic. Or chemosynthetic. So what is photosynthetic and what is chemosynthetic? Here you have to remember photo means what? Light. Clear? तो लाइट रो प्रेजेंस रे जो माने निज पई क्लोरोफिल पिगमेंट को यूज करके खाद्य बने पारंती, that is your photosynthetic organism. Here is there is an equation of photosynthesis. You all remember this equation? What is the process of photosynthesis? Just tell me the equation. 6CO2 plus 12 H2O gives rise to C6 H12 O6 plus 6 H2O plus 6 O2. This is the simple equation. Sunlight presence से chlorophyll pigment को use करके carbon dioxide and water molecules of the raw material and glucose, that is your carbohydrate, is synthesized. This equation is for the photosynthetic organisms. Here just you balance the equation. How many carbon atoms is there? 12. 6 into 2, 12. Here what? How many carbon atom is there? Sorry, 6 carbon atom is there. 6. Oxygen here 12 and 12, 24. Sorry. Hydrogen 24 hydrogen is there. Here what? 24 hydrogen is there. 12 here 12, 24 oxygen atom is there. Here what? 6, 6 and 12, 12, 12. That is your 24. Carbon ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 6ଟା, ଏଠି ବି ତମ କାର୍ବନ କେତେଟା? 6ଟା. ଅକ୍ସିଜେନ 6 ଦୁଗୁଣେ 12, ଇଏ 12 କେତେଟା? 24ଟା. ଏଠି ବି ତମ କଣ? 6 12 6 18, ଇଏ 6 24ଟା. हाइड्रोजन 24टा ଅଛି, ତ ଏଠି 12 ଏଠି 12 ମିଶିଲେ କଣ ହେବ? हाइड्रोजन 24. ତ बैलेंस ହେଇଗଲା इक्वेशन बिल तमरो. This is what about your photosynthetic. Next is your chemosynthetic. Chemosynthetic. Chemo means what? Absence of sunlight. Absence of sunlight. Absence of sunlight. That is chemosynthesis. That means an example लेवा पे देखो deep ocean समुद्र पूरा डेप्थ को सनलाइट केबे पहुंची परिबो कि पहुंची परिबो नाही, तो सेटे से माने किमते निजर खाद्य प्रिपेयर कर दिनु. The complex molecules are broken down into smaller molecules and the smaller molecules कोन तमरा ऑर्गेनिज्म माने कोन सेना को निज खाद्य निबे ग्रहण करथि. So the process in which autotrophic nutrition takes place but without light, that is your chemosynthetic. Clear? बुझा पड़ला? एबे स्लाइड बुझिबा पिले देखो. Here what happened? Mode of nutrition autotrophic. जदि autotrophic होची that may be chemosynthetic and photosynthetic. Heterotrophic भी होची इना बहुत गुणे बैक्टीरिया अछन पिले जमाने सैप्रोफाइट्स जो माने डिकम्पोजर रोल प्ले करते. फॉर एग्जांपल भाबो गोटे कुकुर तम रास्ता रे मरि जाइछ, तमे सेपटे क्रॉस करी करी जाउछ, धीरे 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 सेमानकर बॉडी कोन होची डिकम्पोज होची. फर्स्ट से गोडोटा गायब हो जाउछ, देन पेट, देन मुंड, इन गोडोटे पार्ट तमर गायब हो जाउछ अना ने. तो डिकम्पोजर बैक्टीरियास आर द बेस्ट example of Monera that comes under the category of heterotrophic mode of nutrition. So you have to remember in Monera
two types of organisms are there, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic is again data photosynthetic and chemosynthetic, and then heterotrophic. Next, in Protista, the mode of nutrition here also autotrophic and heterotrophic, but here one difference is there. If the mode of nutrition is autotrophic, then only photosynthetic, that means no chemosynthetic, light ro presence re hi photosynthesis kari paribe au autotrophic mode of nutrition am taku koi pariba. But here there is no chemosynthetic. The chemosynthetic is present in Monera. Here both autotrophs and heterotrophs are there, or the mode of nutrition may be autotrophic or heterotrophic. Autotrophic, that is only photosynthetic. Clear? Next, in fungi. Fungi को हमें green plant अलग बोले, but separate kingdom में ना देले तक, that is your saprophytes. So here there is no chlorophyll. तमरो best example होती है mushroom. Mushroom तमो देखी बाको green color की नहीं. तो fungus are achlorophyllous. That means it a question ही उठुनी autotrophs. तो all fungus are heterotrophic organisms. That's why the mode of nutrition is heterotrophic. That may be saprophytic or parasitic. Clear? Saprophytic माने कौन? जदि dead organism ऊपर से माने निजर dead organism निजर food निजर में extract करते हैं, that is saprophytic. Parasitic that means कौन? Living organism ऊपर infect करेगी, living organism को मारी देगा, that is parasitic. Next, plantae. It a question ही उठुनी heterotroph because all plants have what? Chlorophyll pigment. That's why all plants are green in color. Due to the presence of तुम 10th रे पढ़ी जो ना पिला हरित लवक. Due to the presence of chlorophyll pigment, all plants looks green in color. तो chlorophyll pigment भी अच्छी, sunlight भी अच्छी. तो mode of nutrition in plant is always तुम्हारा autotrophic, and that is what you photosynthetic. Autotrophic and photosynthetic. Animalia, कौन से animals को देखो जो कि green color नहीं. तो all animals lack of chlorophyll pigment नहीं animals से. That's why the mode of nutrition is heterotrophic. In Animalia, the mode of nutrition is heterotrophic. Clear? A slide clearly बुझा पड़ला. If any doubt is there, you can ask me. So, सरला पहले slide. Clear? So पहले already time हो जाए ची. Zoom class भी तुम्हारा 40 minutes से close हो जाएगा. So एपे again हम repeat कर दूँ ची. कौन आगे डिस्कस कले रिपीट कर दूची. फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कशन कले प्रपोज्ड बाय कोपलैंड. 4 नंबर किंगडम हो तमर कोन किंगडम मोनेरा. देन तमर आसिले मोनेरा भितर हम कोन रखुचे ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. देन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर. क्लियर? पांचटा किंगडम कोन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. तो को बेसिस रे क्लासिफिकेशन हेतिला द बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. क्लियर? देन हमें कहले चार्ट को जोड़ा हमें कैरेक्टर्स का डिस्कशन करले. सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो सेल टाइप मोनेरा कोन प्रोकैरियोटिक और सबुजा तम कोन यूकैरियोटिक. सेल वॉल मोनेरा तम कोन नॉन सेल्युलर, दैट इज पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड को नै तयारी हेची. प्रोटिस्टा तम कोन केतेरे अछि केतेरे नाही. फंगाई तम कोन अछि प्रेजेंट बट सेल्युलोज नै काउ नै तयारी हेची. कहितले तुमको कोन काइटिन. यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड काइटिन. फंगल cell wall is made up of chitin. In plantae that is present and made up of cellulose. In Animalia cell wall is your absent. The nuclear membrane monera are absent और सबुजा तमरो present. Clear? Then तमरो body organization cellular, here multicellular, here tissue system is present, and here is also tissue system and organ system is present. Then mode of nutrition already I am discussion. This is all about today's class. In next class we will discuss the kingdom Monera in detail. Kingdom Monera, the bacterial kingdom. Detail विषय discussion करिए पहले. Bacteria size, cell, shape, reproduction किमती होची bacteria. All are the characteristics what are present in kingdom Monera. Clear? Till then, bye bye. Thank you. Catch you in the next class. Okay.